Hello, Assalamu alaikum students. This is your teacher Azka, and today we again going to discuss about the sources of finance. Okay, so yesterday we were talking about the bank overdraft, and there are also some kind of sources of finance which we are going to discuss. Okay, so we were discussing about the short-term external source of finances, and in which we have talked about the bank overdraft. So today we are going to talk about trade credit. Okay, so what is trade credit basically? Trade credit means businesses purchases goods from suppliers and ask to pay back later. It means that you are maybe trading with any supplier, okay, and you are not going to pay them immediately, and you are saying to them that your amount will be paid by us later dates, maybe after 3 months or maybe after 4 months. Okay, so by holding the credit, by holding the amount of creditors, you can also use this amount in as a resource of finance, and you can use this amount for expansion of your business, or maybe if you want to purchase any machinery, like any kind of expansion or any kind of, you can तो किसी भी तरह की, फॉर एग्जांपल आपने मशीनरी परचेज करनी है कि आग में अगर वो कैश आपको किसी भी चीज में अगर चाहिए, बिजनेस के एक्सपेंशन में चाहिए, एज ए कैपिटल चाहिए, आपको आपको कैपिटल ऐड करना है ड्यूरिंग द ईयर, सो यू कैन होल्ड दिस amount of creditors and you can use this amount into different operations. Okay, so but we have some pros and cons for it. So the first pros is we don't need to pay any interest, like we have to pay interest on loans. So in this scenario, we don't have to pay any interest, but yes, this method, this you can say that this source of finance basically have a lot of cons, and the cons is basically it may be destroy your relation in market with other suppliers or maybe with your existing supplier, because supplier also needs their cash, their payment. But if you are not giving them, you are not paying the payments which is necessary, it means that your relations with that kind of with that specific supplier will destroy it badly, and maybe it will destroy your image in the market. Maybe that supplier will tell this thing to the other suppliers also in the market, and maybe in future the other suppliers maybe feel that you are not a trustable company, and maybe they don't want to work with you in future. Okay, so this is the main you can say the disadvantage if we use this trade credit method. Okay. And the second disadvantage which we have to face is maybe we will have lost cash discount. You know that if we pay earlier to our suppliers, so our suppliers, give some kind of cash discounts to us. Now, maybe like if we have to pay maybe $5,000 to our suppliers or maybe $1,000 to our suppliers, so maybe they will give you 5% cash discount or maybe 10% or 9% cash discount. But if you are not willing to pay them early, so it means that you will lose a lot of cash discount, which may be probably it will be like you know that this is your other income. So your other income will lower, and it will you can say that gradually decrease your profitability. Okay, and also you have to pay some interest on late payments, because you know that if you are not willing to pay until a certain date, so maybe your supplier fix an interest rate on your payments, so you have to pay that amount of interest. So it will again you can say that decrease your profitability. Okay, so this is like these are some pros and cons of trade credit. Acha. After we have debt factoring. What is debt factoring? Debt factoring means it is basically a company, debt factoring company, a factoring company basically. And this means that
buying a company debts of a firm for immediate cash. For example, I have a debt factoring firm. Okay. For example, company A is a debt factoring firm. Okay. And company B you can say that company B wants to sell its debts to company A. ओके, डेट फैक्टरिंग का मतलब क्या होता है? डेट फैक्टरिंग बेसिकली एक ऐसी कंपनी है जो किसी भी दूसरी नीडी कंपनी जिसको कैश चाहिए उसके डेट्स परचेज करती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अभी हमारे पास डेट्स हैं, हमारे बहुत से कस्टमर्स हैं और हमारे उनसे पैसे लेने वाले रहते हैं और हम ये चाहते हैं कि हमारे कस्टमर हमें जल्द से जल्द पेमेंट कर दें, क्योंकि वी हैव लाइक वी नीड इमीडिएट कैश। सो दैट इज वाई हम क्या करते हैं, हम ऐसी एक डेट फैक्ट्री कंपनी ढूंढते हैं। हम लोग कंपनी ए के पास जाएंगे और हम उनसे कहेंगे कि आप हमारे डेट्स परचेज कर दो। ठीक है, डेट्स परचेज करने का मतलब ये है, ये कंपनी ए आपको इमीडिएटली आपके डेट्स का 90% पे करेगी, ओनली 90%। इट मीन्स दैट अगर आपको 100K आपके डेट्स हैं तो ये कंपनी 100K में से 90% सिर्फ जो है वो आपको पे करेगी। इट मीन्स के 900। अगर 100K है तो आपको 900K, सॉरी, अगर 1000K है तो वो आपको 900K प्रोवाइड करेगी कंपनी ए। सो वो आपको 90% प्रोवाइड करती है। एंड अदर देन दैट this company A will charge you some percentage of as a service fee also। ठीक है, आपको सर्विस फी भी देनी पड़ेगी। यू हैव टू पे सर्विस फी टू कंपनी ए। ये आपको अमाउंट दे देगी, इसके बाद कंपनी ए जाने और आपके डेटर्स जाने, कंपनी ए खुद ही उनसे डेट्स निकलवा लेगी। वो आपके सेल्स लेजर्स जो है वो ले लेगी और खुद ही उनसे डेट्स लेगी। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर वो उनसे डेट्स लेती है, फॉर एग्जाम्पल उसमें से कोई बैड डेट हो जाता, अगर कोई ऐसा कस्टमर है जो पेमेंट नहीं कर पाता, तो आप लायबल होंगे, बिकॉज you already have collected 90% of your debts. So it means if company A will not successful to you can say that acquire your 100% debts, or maybe in these in the 100% debts in this, maybe company will face bad debts। अगर उनको कोई बैड डेट्स होते हैं, अगर कोई कस्टमर आपका पे करने से इनकार कर देता है, तो कंपनी ए will charge this bad debts to you because you have already collected 90% of your debts। ठीक है, so this is also you can say a very big con for you, because आपको तो इस वक्त कैश की जरूरत है। First of all, company A is not willing to pay you 100%। After that, they will impose you some service fee, some percentage of service fee, and after that वो आपसे बैड डेट्स भी आप ही लायबल होंगे उनको पे करने के। तो इट मीन्स दैट के बाद में आपको बहुत सारी अमाउंट उनको वापस भी करनी पड़ेगी और बहुत सारा लॉस भी देखना पड़ेगा। सो डेट फैक्टरिंग है ये। डेट फैक्टरिंग का प्रॉस जो है वो ये है कि इट विल quickly covers debts, improve your cash flow, and also it saves your time। But cons, we just like have already discussed that um, you will lost 10% of your debts, service fee, you have to pay service fee, and of course you will lost control on your sales ledgers। Okay, and you could be responsible for that if customers doesn't pay। तो ये सारे पॉइंट्स जो हैं वो आपको देखने पड़ेंगे um if you want to use debt factoring for like as a source of finance। Okay, so after that, we have our next source of finance, which is hire and purchase। Okay, hire and purchase means that maybe it is known as basically installment buying। Installment buying means like you will go to a shop if you want to acquire any machinery. So you will go to a shop and you will purchase any machinery which you want to use on installment।
So you have to pay some like down payment to the shopkeeper, and the remaining cost will be paid by you in installment. ओके, ये तो बहुत सिंपल है। ये तो आपके घर में भी ऐसा होता होगा कि आपकी मम्मा जो है वो फ्रिज लेने जाती होंगी किसी शॉप से, और वो किस्तों पे, जैसे हम लोग बोलते हैं, किस्तों पे लेती होंगी, इंस्टॉलमेंट पे लेती होंगी। तो स्टार्टिंग में आपको जितने की भी वो फ्रिज है, फॉर एग्जाम्पल इट इज मे बी कॉस्ट 1.5 लाख, तो उसमें से आपको कुछ परसेंटेज उसकी डाउन पेमेंट देनी पड़ती है। मोस्टली 10% जो है वो डाउन पेमेंट होती है किसी भी एसेट की। तो डाउन पेमेंट आपको पे करनी पड़ती है, बाकी जो है वो आप उसकी कॉस्ट इंस्टॉलमेंट में पे करते हो विद इंटरेस्ट। ठीक है। सो दिस इज काइंड ऑफ हायर एंड परचेज। अच्छा, हायर एंड परचेज किस सिनेरियो में बेस्ट है? उनके हायर एंड परचेज जो है वो हम लोग कौन कौन से सिनेरियोज के अंदर इसको यूज कर सकते हैं? बेसिकली हायर एंड परचेज उस सिनेरियो में बहुत अच्छा है। फॉर एग्जांपल, आप एक आइसक्रीम कंपनी हो, ठीक है, आइसक्रीम कंपनी हो आप, और आपको पता है कि 6 मंथ्स जो हैं आपके बहुत हाई सेल होती है। ठीक है, बहुत हाई सेल होती है, और वो मंथ्स जो हैं वो समर सीजन के होते हैं बेसिकली। समर में बहुत ज्यादा, और विंटर में आपकी सेल जो है वो बहुत ज्यादा स्लो हो जाती है। ठीक है, और आपको पता है कि समर में maybe you have to purchase a building for making your ice cream, and maybe you have to buy some machinery also because you want to bake ice cream on that machinery and different ingredients. तो हम क्या करेंगे, हमें पता है कि सिर्फ समर सीजन के अंदर ही हमारी डिमांड इंक्रीज होगी, विंटर में कम हो जाएगी। तो हम ये रिस्क नहीं लेंगे, हम हायर एंड परचेज नहीं करेंगे। मतलब हम कि वो बिल्डिंग को या फिर उसके अंदर जो मशीनरी लगी हुई है उसमें हम हायर एंड परचेज नहीं करेंगे, यानी कि हम उसको इंस्टॉलमेंट पे नहीं लेंगे, बिकॉज आफ्टर 6 मंथ्स उसका कोई भी यूज नहीं होगा। ठीक है, तो इस ये मेथड जो है वो वहां पर बेस्ट है अगर कोई एक ऐसा एसेट है जो कि आपने लॉन्ग रन में यूज करना है। कोई ऐसी प्रोडक्ट आप बना रहे हो जिसका आपको पता है कि इसकी डिमांड बहुत देर तक चलेगी, उसके लिए आप हायर एंड परचेज कर सकते हो, यानी कि उसमें फिर अगर आप इंस्टॉलमेंट भी देते हो तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि उनकी इंस्टॉलमेंट बहुत सालों तक होती है, मतलब 2 मंथ 2 ईयर्स भी लग जाते हैं, 3 ईयर्स भी लग जाते हैं। तो बहुत सालों के अंदर जो है ये इंस्टॉलमेंट आपकी पूरी होती है। तो इसलिए अगर वो एसेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, और आपकी कोई ऐसी प्रोडक्ट है कि उसकी डिमांड आपको पता है कि वो फर्दर टाइम के लिए काफ़ी ज़्यादा एक्सटेंड होने वाली है, या फिर अगर आप फॉर एग्जांपल आप रिसर्च कर रहे हो और उसके लिए अगर आपको कोई बिल्डिंग और कोई टूल्स और कुछ इक्विपमेंट्स चाहिए, और आपको पता है कि ये जो रिसर्च है आपकी वो मे बी इट विल रिक्वायर 10 ईयर्स, तो उसके लिए आप हायर एंड परचेज कर सकते हो। ठीक है, तो इस सिनेरियो में हायर एंड परचेज वुड बी बेस्ट ऑप्शन फॉर यू। ओके, इसके प्रॉज में फर्स्ट ऑफ ऑल तो सबसे इजी मेथड है ये फिक्स एसेट को परचेज करने का। अदरवाइज यू हैव टू पे अ लार्ज अमाउंट इफ यू वांट टू परचेज एनी फिक्स एसेट। so like if you use hire and purchase method, so it means that you will you will purchase any asset and you will get ownership of that fixed asset very immediately. So this is a big big pros of hire and purchase method. सेकेंड, द इंटरेस्ट रेट इज फिक्स। स्टार्टिंग में जो इंटरेस्ट रेट आपका डन हो चुका है वो फिक्स रहेगा, फ्लक्चुएट नहीं होगा, तो ये एक सेकंड बहुत बड़ा एडवांटेज है। एंड और जब कॉस्ट आपकी कवर हो जाएगी, यानी कि इंस्टॉलमेंट खत्म हो जाएंगी, तो एट द एंड एसेट्स विल बी वुड बी योर्स। सो दिस इज द थर्ड बिग वन प्रॉज, बिकॉज अगर आप किसी और चीज की तरफ देखें, फॉर एग्जांपल हम नीचे लीजिंग के बारे में पढ़ेंगे, तो लीजिंग में सिर्फ आप चीज रेंट पे ले रहे हो। अगर आप 10 साल तक उस चीज को यूज कर रहे हो तो आफ्टर 10 ईयर्स आपने अमाउंट तो बहुत दे दी होगी, लेकिन एट द एंड वो बिल्डिंग वो मशीनरी आपकी नहीं होगी, लेकिन आपने उसको यूज करने के लिए बहुत ज्यादा अमाउंट पे कर दी है। ठीक है, तो इट मींस बट इट इट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन बेसिकली। ओके, तो सो लाइक आई हैव गिवन यू वन सिचुएशन of this ice cream company, so you can use this situation in both, like in leasing and in hire and purchase method. Okay, so we do have some cons of it, of course. First of all, you will have to pay down payment, which is the 10% of the cost of the asset, which may be very high. It depends on the cost of the asset basically. And after you have to pay interest monthly.
Okay. But if a business maybe fails to pay 1 month or maybe 2 months installment, so that company will repossess the asset again. Okay, अगर business जो है वो पेमेंट फॉर एग्जांपल उसने नहीं की इंस्टॉलमेंट की, अगर वो पेमेंट देने में फेल हो चुका है, अगर उसने 1 मंथ भी पेमेंट नहीं की, तो उस एसेट को दोबारा से प्रोसेस कर लेगी। ठीक है, जिस भी फर्म से फॉर एग्जांपल अगर आपने हायर एंड परचेज की है, फिर किसी शॉप से की है, जिससे भी की है, या फिर किसी बिल्डर से की है, ठीक है, तो ये भी एक चीज होगी। ओके, तो इवेलुएशन है इसकी। यहाँ पे आई actually included one more point which is related to evaluation. This method would be best if a company wants to acquire asset in a long run. So yeah, I have already given you the scenario of this ice cream and or both research and product. I have already given you all examples related to this. Okay. So after this, we are going to discuss about the leasing. लीजिंग रेंटल एग्रीमेंट होता है, आप रेंट पे लेते हो, कोई भी चीज परचेज करते हो। एसेट पर्पस होता है, you can lease a machine, you can lease a factory, a building, okay, and you have to pay some monthly payment, okay, but it will, you can not show any ownership on it like permanently. You are just paying a specific amount of using it, nothing else. तो इसका प्रॉस जो है, मतलब इसमें ये है कि इमिडिएटली अगर आपको कोई चीज चाहिए और आपको पता है कि वो आपको कुछ टाइम तक चाहिए, जैसे मैंने आपको ऊपर एग्जांपल दी, फॉर एग्जांपल एक कंपनी है वो शर्ट्स बनाती है, ठीक है, और अचानक से जो है वो 14 अगस्त का टाइम आने वाला है, और अब उस फर्म को पता है कि अब जो है वो हमें थोड़ा सा डिजाइन चेंज करेंगे, लाइक वी हैव टू प्रिंट अ लॉट ऑफ फ्लैग्स एंड डिफरेंट काइंड ऑफ you can say the quotation related to the freedom of our country. They have to print these type of things on the shirt. So that is why they have to find a machinery which is best suitable for like this printing machine. तो उनको एक प्रिंटिंग मशीन परचेज करनी पड़ेगी, ओके, और उनको पता है कि ये 14 अगस्त के बाद दोबारा से इसकी कोई चीज की डिमांड होगी नहीं। ऐसा नहीं है कि वो शर्ट्स जो हैं वो परचेज करेंगे कस्टमर आपसे दोबारा, ठीक है। तो इस सिनेरियो में बेस्ट है कि आप उस मशीनरी को लीज पे ले लो, ठीक है, आप उसको क्योंकि ज्यादा देर तक यूज करने वाले हो नहीं, so it would be best that if you acquire this asset on leasing, on rent, okay. So pros जो है basically it saves the cost of your down payment. डाउन पेमेंट आपको करंट परचेज में करनी पड़ी थी, बट इस केस में नहीं करनी पड़ेगी, तो डाउन पेमेंट से कॉस्ट सेव होगी। दूसरा ये कि अगर वो मशीनरी फॉर एग्जांपल इन बिटवीन खराब हो जाती है, उसको मेंटेन करना पड़ता है, तो उसकी कॉस्ट कौन पे करेगा? वो ही लीजिंग फर्म पे करेगी जिससे आपने वो मशीनरी लीजिंग पे ली हुई है, ठीक है। तो एक ये भी इसका बहुत बड़ा एडवांटेज होगा। कौन जो है वो उसका ये है कि इट इज बेसिकली यूजुअली मोर एक्सपेंसिव। फॉर एग्जाम्पल अगर हम दोबारा से कंपनी ए आइसक्रीम कंपनी तरफ चले जाते हैं, और वहां पे अगर हम लोग फॉर एग्जाम्पल विंटर में 6 मंथ्स के लिए कोई मशीनरी लीज पे लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल हमें पता है कि सिर्फ 6 मंथ तक हमारी डिमांड चलेगी, आप लीज पे कोई मशीनरी परचेज कर रहे हो, सॉरी परचेज नहीं, आप उसको लीज पे ले रहे हो, तो मे बी फॉर एग्जाम्पल अगर 200K आप पे कर रहे हैं उस मशीनरी को यूज करने का आफ्टर 1 मंथ, इट मीन्स दैट इन 6 मंथ्स यू हैव टू पे $12,000 in order to use this machinery. So maybe the cost of this machine is only, if you go to the market and if you want to purchase this machinery, so maybe it will cost you only $1,000. Okay, so it means that you are paying extra $2,000 to this leasing firm. So sometimes it is more expensive than buying. And of course, after using it for many months and you like have already deposited a lot of amount to the leasing fund, but at the end this asset will not be yours. You cannot possess this asset, you can not show the ownership on this asset. This is a very big con for leasing. Okay. Okay, so students, I know that there are already we have already like late, and there are I think 5 to 6 sources of finance we still need to understand.
But after this, I will make another video and we will cover the remaining part in our next video. Okay, goodbye.